फनग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 14 से 20 साल के टीनेजर्स को मौका मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आज आई हैव द को-फाउंडर ऑफ फनग्रो। बोलना बहुत आसान है, ज्ञान तो कोई भी दे देगा, राइट? Correct. रियल लाइफ में क्या हो रहा है? पैसा स्पेंड करना इज वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अर्न? 14 एंड अबव बच्चा आ रहा था तो उनका क्लियर आस्क था, पापा से पैसा नहीं चाहिए। अब बच्चे ने अगर अपने 1000 रुपए कमाए हैं तो वो उसको बहुत अटैच्ड रहेगा। How instrumental has been your daughter's role? वी हैव गुड डेज एंड वी हैव बैड डेज। जो भी होगा बाद में देखेंगे, अभी काम करते जाओ। पांचों शार्क्स में से which one was you were like targeting कि ये शार्क हमें चाहिए? अगर जाते जाते अगर आपको 20s में किसी को कोई एडवाइस देनी हो, आज है तो राज है। आज है तो आज है। माय मॉम कीप्स सेइंग वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इग्नाइटेड इनोवेटर्स। इन एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक 2 के फाउंडर से, क्योंकि जो आप जर्नी 10-15 मिनट में देखते हैं वो जर्नी उससे बहुत लंबी होती है। वो जर्नी कई बार 1 साल 2 साल कई बार 10-10 साल लंबी होती है। आज आई हैव द को-फाउंडर ऑफ फनग्रो, आई हैव पायल जैन विद मी एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट हर टू शेयर विद हर कि उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने एक टीन लैंसर वेबसाइट बनाने के लिए और टीन लैंसर ऐप क्रिएट करने का सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज एम्पावरिंग टीनेजर्स टू अर्न सम मनी, बट इससे वो सीख सकते हैं कि कैसे वो पैसा कमा सकते हैं और कैसे अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। So welcome Payal, welcome to this program and I'm so happy to have you here. Thank you, Utkarsh, for having me here. Hello everyone, this is Payal. In year 2018, I got a chance to work into digital payments, that too with Indian companies like Flipkart, Myntra, Zomato, Swiggy. Then I realized कि teenagers को बहुत सारे ऐसे apps available हैं जहाँ पे वो spend कर सकते हैं, may it be on food deliveries, may it be on buying something online, may it be booking trips or anything. That is where I started thinking there should be some app or some platform wherein हम उनको बता सके कि पैसा earn कैसे होता है। पैसा स्पेंड करना इज वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अर्न? उसको माइंड में रख के आई थॉट ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्लो वेयरइन हम पहले उन्हें बताएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, अर्निंग कैसे होती है। सो May 2021 इज वेयर आई स्टार्टेड फनग्रो विद द सोल एम ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू ऑफ मनी टू टीनेजर्स in a fun manner. It was in a fun manner wherein we started with chores based management app. जहाँ पे as a parent you will give tasks to your children. Children can also vouch if they want to work on something that is inculcating right habits. May it be related to say having less screen time or getting good grades or helping at home. And parents decide करेंगे कि उनको कितना reward करना है. Love that. We started this. It was for 10 to mainly 16-year-old. This idea of rewarding children, I think ये बहुत ही इफेक्टिव है। और मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा। मेरे 2 बेटे हैं, वो 9 and 12 राइट नाउ, एंड उनको इनिशियली जब खुद सोने में मुश्किल होती थी तो आई यूज्ड टू क्रिएट अ स्टार सिस्टम फॉर देम कि जितने नाइट्स में वो खुद सो पाएंगे उतने नाइट्स में मैं उनको एक स्टार दूंगा, एंड ग्रेजुअली व्हेन दे विल अर्न मोर स्टार्स दे विल गेट अ रिवॉर्ड फॉर दैट। एंड टिल नाउ, एंड दिस वाज लाइक 3-4 years ago, बट टिल नाउ आज भी जब भी मैं उनको कुछ इंसेंटिवाइज करना होता है उनको कहता हूँ घर के अगर थोड़े से काम कर लोगे तो फिर यू गेट सम सॉर्ट ऑफ पॉकेट मनी। सो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर पेरेंट्स। 14 एंड अबव बच्चा आ रहा था तो उनका क्लियर आस्क था, पापा से पैसा नहीं चाहिए। ओके, दे वर वेरी क्लियर, सो दैट वाज अ वेरी लाइक आई ओपनर फॉर मी कि इनके पास इंटेंट तो है कि इन्हें काम करना है। देन आई हैड टू फिगर आउट कि स्किल्स कितनी है। And at that point in time when I was also building Fnogro, right? So there was so many things that you need as a founder to get help, right? Say for example, video creation. So we had different features. We wanted to create the videos, 1 minute, 2 minute explainer video. What I realized is when I'm going to establish services in the market, they were asking anywhere between 10,000 to 1 lakh for a 1 minute video, depending on what quality they were providing. Correct. And mine was a bootstrap company. Right. मैं खुद का पैसा डाल रही थी तो I was like कि अगर मुझे 5 वीडियो बनाना है तो I can't shell out say 1 lakh for that. Correct. That is where I said कि okay, and my main source of inspiration was my daughter. Love that. Via, she helped us to design the logo also. She helped us in bringing up our social media page. If you'll see initial post till 100 or something,
were the posts which were created by my daughter and my nieces around me. Right. Because they were very good at it. So I realized कि okay, social media marketing इनको आती है, video creation इनको आता है, graphic designing इनको आती है, content they can write. So why not actually make it work? So that is where I did a POC, wherein companies आई और बच्चे आए and उनको देखा कि वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं. And that is how Unroll started, Screenlancer started. Love that, love that. That's such an interesting story. And as you were sharing this, Payal, बहुत सारे questions मेरे दिमाग में आ रहे थे. Teaching financial literacy to children. ये need कहाँ से कैसे arise हुई? एक बार आप थोड़ा सा इसमें, like, if you can share a little bit more on that, because and maybe share some personal experience that you might have with your daughter. Sure. So with respect to financial literacy, right? जैसा आपने बताया, incentive based behavior सब लोग किसी ना किसी वे में घर पे करते हैं. Correct. किसी कोई एक्सेल शीट बनी होती है, कोई नोटबुक पे नोट करता है कि ठीक है आज तुम इतने मार्क्स ले आओ, विल गिव यू समथिंग. राइट. वहां से जब शुरू हुआ तब इसी बच्चों का, एज आई सेड राइट, फाइनेंशियल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट कब दिमाग में आया, जब बच्चों को ये पता लगने लगा कि ठीक है हमें अगर कुछ रिवॉर्ड लेना है हमारे पेरेंट्स से, तो हाउ कमिटेड वी हैव टू बी. अर्निंग में कितनी मेहनत लगती है. सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्किल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट क्लियरली. जब आप अपनी पापा से निगोशिएट कर रहे हो कि 1 घंटा स्क्रीन टाइम रहेगा दिन का, उसके मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगा, एंड यू आर सेइंग कि नहीं, मेक इट 50. Correct. You are negotiating in that, right? Yeah. That is what is required whenever you will join the workforce also, right? Absolutely. It will also ensure that कि you are committing on something. You are saying that in a day मैं 1 घंटा ही देखूंगा, so it means you have to manage your time accordingly. Correct. You have to plan your day accordingly. So proper planning is required. So that is happening, and financial management is all about your planning. Knowing what you have and where to spend, that comes into picture. And secondly, जब आप काम पूरा डिलीवर करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा. Right. Once that money comes in, financial literacy will automatically come, right? अब बच्चे ने अगर अपने 1000 रुपए कमाए हैं तो वो उसको बहुत अटैच्ड रहेगा. जो पैसे की वैल्यू है वो उनमें कहीं ना कहीं इम्बाइब हो रही है. एंड ये जो इंसेंटिव आप दे रहे हैं, उस इंसेंटिव से they are going to own that money, they're going to own the planning, they're going to own that time management. I think ये बहुत ही अच्छा तरीका है. And you know, as a coach, so I coach people, Payal, and मैं बहुत लोगों में ये देखता हूँ कि ये जो अकाउंटेबिलिटी लेना है, ओनरशिप लेना है, कई बार लेट 20s और 30s में भी ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. Absolutely love that. एक और क्वेश्चन पायल दिमाग में आ रहा है, like how instrumental has been your daughter's role? So my daughter plays a very important role. जैसे value of money भी वहाँ से शुरू हुआ. She is excellent in almost everything. But we coming from a financial background, हम लोगों ने उसको basics बताया था, हमने details नहीं बताई थी. That is there because see, we living in Mumbai, she had all the resources with her. तो value of money उसको prices नहीं पता है. अगर आप petition पे जा रहे हो तो how much it will cost? Correct. It cost 1 lakh or 3 lakh. Right. So that kind of sense was required. So that was the inspiration which I got from it. If she being so sincere, she's not spending left, right and center, but still she needs to know what is the cost. And second is, आज भी जब से, for example, if there is anything related to social media or project wise also, अगर कोई company का project आता है, तो I take her feedback saying that कि how will teens pursue it? Got it. Is it like we are giving them a project which is very complex? Right. So Right. she helps us a lot, yeah. Oh, absolutely. So you have a very young member on your board of directors. That's So wonderful. she is helping us without being on board of network, yeah. Absolutely. So Payal, one more question that I ask all my founder conversations and when I have them, कि जब आप अब जैसे 18 से 20 महीने हो गए फन ग्रो को स्टार्ट किए हुए, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं when you feel that high or the rush of being an entrepreneur, and then there are other moments where you feel like यार कहाँ फंस गए, क्यों ये कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं कर लिया, या क्या जॉब में वापस चले जाए. How have you dealt with both of these scenarios and कैसे ये आपके सामने आते हैं? Okay, it's a very interesting question. Being a founder is like a roller coaster ride you are on. And what it means is, as you said, right, we have good days and we have bad days. To be honest, it's not very easy. जब high होता है तब तो it's all good. You have so many moments wherein you see that, okay, we are going in the right direction. At times when even after working for so long or working hard on some initiative and it didn't turn up like the way you want, Yeah. आपको लगता है कि यार इतना मेहनत, मतलब see if you are a 20-25
ईयर ओल्ड, आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि सर्विस में क्या होता है. करेक्ट. अनसर्टेनिटी रहती है दोनों के लिए, बट मी कमिंग फ्रॉम अ जॉब इंडस्ट्री, राइट, मुझे पता था कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. एंड ऑफ द मंथ मेरे को सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी. करेक्ट. एंड दैट टू वर्किंग इन अ लाइक अ वेरी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, जहाँ पे आपकी टीम है, आपको रिपोर्ट कर रही है, आप उनको काम बता रहे हो, काम हो रहा है, इट्स ऑल इन द राइट डायरेक्शन, एंड यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम वेयरइन यू कैन गो एंड आस्क देम टू कंप्लीट. Startup में you have to build that support system. Thankfully, we have built, our friends and families have helped a lot. Juggling between all this and not seeing the outcome sometimes make you feel low. Yeah. But I have only two motto like which I work on. One is keep going. कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, but आप अपना long term plan रखो, vision रखो. Right. Along with that, you should have a short term or a daily plan also. Beautiful. Yeah. And second is be fearless. जो भी होगा बाद में देखेंगे, अभी काम करते जाओ. Love that. That's the only thing. So yeah, no, thank you for sharing that. So I'll just क्योंकि हमारे ऑडियंस में बहुत ऐसे हैं जो अपने अर्ली 20s या लेट 20s में है, तो उनके लिए आई थिंक ये जो दो चीज़ें आपने बोली हैं कि इफ़ यू हैव अ विजन, जस्ट कीप गोइंग टुवर्ड्स इट और उसको आप अचीव कर लोगे, बट उसकी अचीवमेंट के लिए जस्ट ब्रेक इट डाउन. मैं इसको ऐसे बोलता हूँ पहले, जैसे अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आप एक बार में ऊपर नहीं पहुँच सकते. यू विल हैव टू ब्रेक दैट जर्नी डाउन. उसको हर रोज़ की जो टास्क है, जैसा कि आपने कहा, उनके ऊपर फोकस करो, एंड देन बी fearless. But how does that position come? Like how does one learn to be fearless? अगर आपको अपनी बेटी को समझाना हो कि go out in the world and be fearless, what would you tell her? First, I have to show her that I am having the same approach. Yeah. Because बोलना बहुत आसान है, ज्ञान तो कोई भी दे देगा, right? Correct. Real life में क्या हो रहा है? So she has seen everything, like how I react. At times, she was the one where I was going back and saying, "Yaar, I don't know what I'm doing. Whether it's the right thing I'm doing." Being just a 16-year-old, she is very mature. She is like, okay, mom, think in a way that, okay, when you were working for different companies, how many people knew about you? Right. Right now, when you're working hard, right, all this effort which you are putting in is making teens learn out of it. अगर आज आपके प्लेटफॉर्म पे 5 लाख टीनेजर्स हैं, उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप वो चीज़ देखो. एंड इट्स जस्ट दैट एवरी डे यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन. ऐसा कोई स्विच नहीं है जिससे आई विल से कि ओके नाउ आई एम फियरलेस और आई विल कीप गोइंग. स्टिल आई हैव दोज डेज वेयर इन आई फील लाइक कि यार पता नहीं, बट जस्ट कीप गोइंग, दैट्स इट. Yeah, no, I use this often. मैं इसको ऐसे कंपेयर करता हूँ पायल कि आप ये समझ लो, एंटरप्रेन्योर ना एक शेर पे बैठा है और बाहर देखने वाले कह रहे हैं वो देखो कितना ब्रेव इंसान या फीमेल है, और वो एंटरप्रेन्योर बेचारा सोच रहा है एक मिनट के लिए कि कहाँ फंस गया मैं, कि तुम्हें तो लग रहा है मैं बहुत फियरलेस हूँ, बट अंदर से तो हमारी हालत भी उतनी ही मुश्किल में जाती है. बट आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड कि अपना जो विजन है उसको क्लियर रखो, और कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है. You will have to work on it each and every day, and that's how you become fearless in life. So I think that's it. Two important things also apart from this approach is सबसे पहले तो रीड करना जरूरी है. मतलब आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को देख, that is my motivation for sure. Correct. किसी भी कंपनी को मैं देखती हूँ क्योंकि wow we want to be like this. Correct. तो पूरा बैकग्राउंड if I check, हम आज उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, but they started 10 years 15 years back. Absolutely. What they went through. So that helps you to realize कि हाँ उन्होंने 5 साल 10 साल काम किया है. That is where they are here. Why they are here today. The second important thing is networking. आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं. आई एम कनेक्टेड विद सॉन्डर कनेक्ट, मुंबई फिनटेक, जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं. दे शेयर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. मतलब इट्स नॉट यू अलोन इन द जर्नी, बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु आर doing everything whatever it takes to make the venture success, and it's very inspiring. God, amazing. Thank you for sharing that. So पायल, ये तो हमने बात करी फेयरलेस होने की और इस चीज को अपने आप में स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन का ना सोचने की, बल्कि टेक इट एज अ प्रोसेस. नाउ कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको फन ब्रो के किसी टीनेजर की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो आप हमसे शेयर कर सकें, which will inspire our listeners to do their best. Okay. So we have many teenagers, say from Jaipur, from Jammu, who joined us like they were the early teen lancers. And आज तक का उनका commitment, if I talk about, there are few people who are continuously coming on the platform, applying on the projects, and
they are like focusing on what are the learnings out of it. See, हम earning की बात कर रहे हैं. Earning is just a traction wherein you are getting the money. हम लोगों का मेन एम है कि अगर 15, 16, 17 साल का बच्चा आता है तो उसकी लर्निंग कितनी हो रही है प्लेटफॉर्म पे. आपका कम्युनिकेशन हुआ, आपका प्रेजेंटेशन हुआ, आपकी स्किल्स तो ऑब्वियसली डेवलप हो रही है, आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो. तो एक जम्मू से लड़की थी, she worked on social media marketing for 2-3 companies. Okay. उसके बाद उसका 12th में she was in 12th and then she wanted some LOR through us which we provided, and she came back stating that कि because I have worked with Panro, 2-3 कंपनी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, it helped me to get into my dream university क्योंकि I had that confidence in me. Right. कि मुझे क्या जवाब देना है, कैसे देना है. It was showing on my profile also कि मैंने real work किया है. Love that. Beautiful. That's such on the ground impact because क्योंकि teenagers के लिए education तो एक part है. I think education is one part. Earning एक secondary outcome हो गया इस पूरे process का, but जो learning वाला part आप बोल रहे हो, how to interact with corporates, how to get projects done, how to manage their time, how to like it's amazing what you're building and what you're teaching kids almost is very phenomenal. Maybe one last question on this and then थोड़ा सा fun question की तरफ चलेंगे. Why do you think, according to your perspective, why is learning important? Learning is part of life, right? Learning ऐसा नहीं है कि 15 साल के लिए learning important है. मेरे लिए भी learning important है. Coming from service to job to entrepreneurship, मैं आज भी learn कर रही हूँ और मैं कल भी learn करती रहूँगी. Because आप stagnant नहीं होना चाहते. With too much happening around you, if you will not keep what is happening, then you will be like stagnating. So learning is important. It can be in any form. Yeah, perfect. तो हमने उसे fun बनाया है. So it's not preachy. Yeah. Final question, Payal. As you walked into that Shark Tank, उसमें जाते हुए 5 sharks में से, which one was you were like targeting कि ये shark हमें चाहिए? हम लोग चाहते थे कि हमें नमिता से definitely because my daughter was already part of a program by IgnitedNeurons. Okay. And we knew कि she promotes entrepreneurship in team. And in there she was our first choice for sure. Right. Then we wanted Amit Jain, Piyush Bansal and Anupam also. Okay. The main reason is they are also doing the matchmaking. Let's say we are doing the matchmaking between a company and a teenager. They're also doing. They have built that kind of platform. So we were hoping कि इनमें से कोई भी आए या सब आए. In fact, Aman Gupta also. But we are very happy to have Namita and Amit Jain, and to be honest, we are getting a lot of help from both of them. Amit Jain की पूरी team हमारे साथ involved थी at each and every stage. Right after our pitch, we have met him twice after that, and he's very hands-on investor, so to say. Excellent. अगर Shark Tank ना हुआ होता Payal, तो फिर FunGrow किस डायरेक्शन में जा रहा था? Thankfully, FunGrow जैन से बहुत अच्छा पिक किया था. मतलब हमारे अगर Shark Tank के पहले के नंबर भी देखेंगे आप, if you will follow my LinkedIn, right? Teens बहुत आ रहे थे हमारे इस पे. They wanted to earn without any marketing spend. The good part is कि we were not spending anything and we were already like 3.5 lakh people on the platform. Wow. With Shark Tank, हमको companies भी बहुत आने लगी. That's a very good point for us because now everybody knows us. The trust factor build हो गया है, right? Prior to Shark Tank, when we were approaching to companies, they were like, okay, any other company. There's so many people who come and talk about their offerings, right? With Shark Tank, it has helped us to make that kind of pitch and make them understand that yes, it's working. And company side से हमें Shark Tank से बहुत help मिली है. Obviously, now we are like a known brand that is helping us. So we are now more than 5 lakh registered users on the platform, and all thanks to Shark Tank here. All thanks to your and your team's effort, Payal. I think it's amazing what you're doing, and I wish you the best. Thank you for taking this time out and talking to us and talking to our viewers. अगर जाते अगर आपको 20s में किसी को कोई एडवाइस देनी हो, तो आप क्या लास्ट मैसेज उनको दोगे? Be fearless. अगर कुछ आपके माइंड में आइडिया है तो आप प्लीज उसे कर लो, बिकॉज अगर ऐसा सोचा कल करूंगा तो कभी नहीं होगा. आज है तो राज है. आज है तो आज है.
my mom keeps saying. तो जैसा कि पायल की मॉम ने कहा, आज है तो राज है. We will take that word, and this was another episode of Ignited Innovators. We are on a mission to touch a billion lives positively. As always, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So अगर अभी तक नहीं किया है, why don't you go ahead and do that?